Hi guys, welcome back to the channel. I hope you have already seen part 1 of this chapter before coming to this part 2. If you have not seen part 1, please go and see part 1 and then you'll understand the part 1. So in part 1, we have completed the company rule, the Regulating Act of 1773, Pitt's India Act of 1784, Charter Act of 1833 and Charter Act of 1853. Now we are starting with the Crown Rule. Okay. So first act in the Crown Rule was Government of India Act Government of India Act of 1858. Okay. The importance, the significance of this act was that it was enacted in the wake of revolt of 1857. Okay, so एक important चीज इस एक्ट के बारे में ये थी कि जब सिपॉय म्यूटिनी हुई थी, जब रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उसको उसको ध्यान में रखते हुए ये एक्ट इनेक्ट किया गया था, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। GOI इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब सिपॉय म्यूटिनी के बाद में अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इन्होंने अच्छी चीज़ें की थी, उनके अकॉर्डिंग वो अच्छी चीज़ें थी, इसलिए उन्होंने इस एक्ट को नाम दे दिया एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग गुड थिंग्स फॉर द इंडियन पीपल। ओके, it abolished the East India Company and transferred powers of government, territories, and revenue to the British Crown. Now, the second reason behind calling it Good Government of India Act was कि East India Company, they had put all the blame on East India Company कि ये जो मिस गवर्नेंस था, ये जो बुरी चीज़ें थी, वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डूइंग। अब उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स थी, रेवेन्यू की पावर्स थी, टेरिटरीज की पावर्स थी, वो सारी ब्रिटिश क्राउन ने ले ली। ओके, ब्रिटिश क्राउन टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग इन इंडिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी अब खत्म हो चुकी थी। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। इंडिया henceforth was to be governed by her majesty. ओके, इसके आगे जब ईस्ट इंडिया कंपनी हैज finished now, it is no more functioning, अब क्या हो रहा है, what is happening now is अब इंडिया का जो गवर्नेंस है, इंडिया पे कौन राज करेगा, हर मैजेस्टी। ओके, नाउ GGI इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया became Viceroy of India. ठीक है, GGI became the Viceroy of India. Who was the first Viceroy of India? Lord Canning, and he was the direct representative of British Crown. Okay, so British Crown का he was the direct representative. Okay, for example, जैसे अगर कोई गेम्स हो रहे हैं कहीं बाहर कंट्री में, तो फ्रॉम इंडिया मेरी कॉम इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया, वैसे ही ब्रिटिश क्राउन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, लॉर्ड कैनिंग्स। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज इट अबॉलिश्ड COD and BOC. Remember what was COD and BOC? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, जिनको कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स दे हैड डिवाइड करके दिया था, उसको ख़त्म कर दिया। इसका मतलब ही क्या था, एंडेड डबल गवर्नेंस, क्योंकि इन अर्लियर स्लाइड व्हाट वी सॉ वाज, आई विल जस्ट शो यू। सी हियर इन पिट्स इंडिया एक्ट हमने क्या देखा था कि सीओ कमर्शियल अफेयर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया था, और पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अपॉइंट किया था, एंड दिस वाज कॉल्ड डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, है ना। ये हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट में। बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसी का मतलब क्या था, डबल गवर्नमेंट का भी एंड हो गया। ओके,
Third point is created new office of Secretary of State. This is states. Sorry, this it has rubbed over here. I'll explain you. एक न्यू ऑफिस बना, एक न्यू पोजीशन आई जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड इट हैज़ कंप्लीट अथॉरिटी ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. ही वॉज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, दैट इज ब्रिटिश पार्लियामेंट. एक नई पोजीशन, एक नई वैकेंसी निकली थी जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. ओके, एक नए ऑफिसर को अपॉइंट करने वाले थे, एक नया पोजीशन उन्होंने डिज़ाइन किया था, which was called Secretary of State, and he took complete authority over Indian administration. Secretary of State का ने क्या किया था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की कंप्लीट अथॉरिटी उनके पास थी, एंड ही वॉज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. ओके, ही वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, दैट वॉज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट. Now moving on. Fourth point was established 15 members Council of India to assist Secretary of State. Now an earlier point we have seen कि एक उन्होंने नया ऑफिस को अपॉइंट किया था जिनका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और इन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर का काउंसिल बनाया गया, एक 15 मेंबर्स का ग्रुप बनाया गया जिनको SOS मीन्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेड करेंगे. ओके, नाउ दिस काउंसिल फंक्शनड एज अ एडवाइजरी body of chairman of सॉरी, दिस काउंसिल वॉज द एडवाइजरी बॉडी. ये काउंसिल क्या था, एक एडवाइजरी बॉडी था, वो लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस कर सकते थे. एंड दिस 15 मेंबर काउंसिल के चेयरमैन कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एज अ बॉडी कॉर्पोरेट. he was he was capable of suing and being sued. Okay, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो एक ऑफिसर थे उनको एक बॉडी कॉर्पोरेट जैसे ट्रीट करते थे. बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक एंटायर इंस्टीट्यूशन जैसे उनको ट्रीट करते थे. अगर किसी ने, और एक ट्रांसपेरेंसी थी, अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो ही कुड सू देम. सू मतलब ही कुड उनकी क्लास ले सकते थे, एंड लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती थी उनके ऊपर. एंड if he is doing something wrong, he could also be sued. Okay, this act was largely confined to improvement of administrative machinery. ये act, because it was called Act of Good Governance और सिपाही म्यूटिनी के बाद में हुआ था, तो बहुत केयरफुल स्टेप्स इसमें लिए थे to improve the administrative machinery, because ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारा कुछ स्कैटर करके रख दिया था. ओके, एंड टू उसको सब चीज़ें समेटने के लिए, टू सब कुछ एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए यहाँ इस एक्ट में ज़्यादातर फोकस था टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. ओके, नाउ मूविंग ऑन. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 एंड 1909. Okay, after revolt British felt necessary of seeking cooperation of Indians. Okay, therefore above 3 acts were enacted. ठीक है, अब रिवॉल्ट में पता चल गया कि इंडियंस हमको अपोज कर रहे हैं, तो ब्रिटिश ने सोचा कि इफ इंडियंस आर अपोजिंग अस एंड इफ वी डोंट इंक्लूड देम तो वी विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल देम, है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडियंस हमको अपोज कर रहे हैं और अगर हमने उनमें से कुछ लोग को अपने साथ में लेके काम नहीं किया तो इनका अपोजिशन और बढ़ जाएगा, है ना. क्योंकि इंडियंस की वही डिमांड थी कि हमारे लोगों को, वी शुड बी रूल्ड बाय आवर ओन पीपल, है ना. इसलिए धीरे धीरे ब्रिटिश ने सोचा कि हम लोग इंडियंस को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि अगर इंडियंस हमारे हम मतलब इफ़ इंडियंस आर इन्वॉल्व विथ अस तो बाकी जो सिटीजन्स है मे बी उनका परसेप्शन चेंज हो जाएगा. ओके, सो आफ्टर रिवॉल्ट ब्रिटिश फेल्ट इट नेसेसरी टू सीक कोऑपरेशन ऑफ इंडिया. देयरफॉर ये 3 एक्ट
इनेक्ट किए थे. So in तीन एक्ट में will majorly see how Indians were made the part of the governance, how Indians को कैसे governance का part बनाने की कोशिश की, कैसे include करने की कोशिश की. Okay, so first point is associated Indian with law making process. Okay, so as we have seen सबसे important functions अभी तक हमने क्या देखे, revenue देखा है, लॉ मेकिंग देखा है, उसके बाद मिलिट्री देखा है, सिविल देखा है ना. तो अगर इंडियंस को इंक्लूड करना है, इफ यू वांट टू इंक्लूड इंडियंस, द मेजर थिंग वुड बी टू इंक्लूड देम इन लॉ मेकिंग प्रोसेस. ओके, वाइसरॉय nominating, and how it was done was by making the viceroy nominate some Indians to the expanded council. Okay, so वा- कैसे इंडियंस को कैसे इंक्लूड किया जाए, एक जो इंडियंस है उनको नॉमिनेट किया जाए एक्सपेंडेड काउंसिल में पार्टिसिपेट करने के लिए. ओके, सो लॉर्ड कैनिंग्स ने क्या किए, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, इनको नॉमिनेट किया to come into to get into the law making process. Okay, so Raja of Banaras, Maharaja of Patiala and Sir Dinkar Rao were the three first Indians who were included or who were nominated in the expanded council and in the lawmaking process. Okay, so the second point is initiated decentralization and restored legislative powers to Madras and Bombay. Okay, so क्या किया कि डिसेंट्रलाइजेशन इनिशिएट कर दिया. अब तक क्या हुआ था कि सारे पावर्स सेंट्रल के पास में थे, है ना. तो डिसेंट्रलाइज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब पावर्स, you distribute the powers to the provinces also so that they can make their contribution in the administration. Okay, so जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव सीन कि मद्रास और बॉम्बे को के पावर्स ले लिए गए थे, दे वर नॉट गिवन एनी पावर. सो अब क्या हुआ था, लेजिस्लेटिव पावर्स बॉम्बे और मद्रास को रिस्टोर कर दिए थे, मतलब वापस दे दिए गए थे, दे वर गिवन बैक द powers. Okay, so the next point is establish legislative council for Bengal, NWFP's northwest frontier province and Punjab. Okay, Bengal, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब में लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश किए गए थे. ओके, एम्पावर्ड वॉइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स, वॉइसरॉय जो थे उनको रूल्स और ऑर्डर्स बनाने के लिए एम्पावर किया गया था. Gave recognition to portfolio system introduced by Lord Canning in 1859. Okay, जो पोर्टफोलियो सिस्टम जो लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किए थे 1859 में, दैट वाज गिवन recognition. Okay, now we'll see what was the portfolio system. Under portfolio system, member of Viceroy's Council was made in charge of one or more department of the government, and he was authorized to issue final orders on the behalf of council. For example, किसी भी एक मेंबर को वॉइसरॉय के काउंसिल में के किसी भी एक मेंबर को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया, फॉर एग्जांपल, है ना. एंड उनको एक पावर दे दी कि यू आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और अब इस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग जो भी ऑर्डर्स लेने हैं या जो भी डिसीजंस लेने हैं, यू कैन टेक देम ऑन द बिहाफ ऑफ द government. Okay, so this was the portfolio system, and this empowered voice and the portfolio system also empowered viceroy to issue ordinances. Okay, life of ordinance was 6 months. So this act, इस एक्ट ने क्या किया, वॉइसरॉय को एम्पावर किया, वॉइसरॉय को पावर दिया टू इशू ordinances, है ना. ordinances issue, I'll explain you what do you mean by ordinances, but for example कि एक एक्ट पास कर दिया है. Okay, and validity of that act would be of 6 months, and viceroy was given authority to issue that ordinance. Okay, now next point, we are done with features of
Act of 1861. Now we are moving on to Act of 1892. Guys, just a minute, I'll have some water. Okay, now features of Act of 1892. Now we'll see what happened in 1892. So what we have seen earlier is basic theme क्या है इन सब एक्ट की कि इंडियंस को वो लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, है ना. दे आर मेकिंग थिंग्स, मतलब जो प्रॉब्लम्स ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से क्रिएट हुए थे और जिस प्रॉब्लम्स की वजह से पीपल वेर डिस्टर्ब, दे आर ट्राइंग कि थोड़ा थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए. ओके, so the first point is increase in number. This arrow is increase in number of non-official members in the central and provincial legislative council but maintain the official majority in them. So अब तक हमको पता चल गया है दो काउंसिल थे, एक सेंट्रल काउंसिल मतलब फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड प्रोविंशियल काउंसिल मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है सेंट्रल काउंसिल में और प्रोविंशियल काउंसिल में वो बढ़ा दिए गए थे, है ना, बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी, है ना. सो वी हैड सीन अर्लियर कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में दे हैड इंक्लूडेड इंडियंस आल्सो. तो नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज कर दे रहे हैं, बट ऑफिशियल मेंबर्स मतलब जो फाइनल डिसीजन मेकिंग मेंबर्स है उनको ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन है ना. बट दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट ओवर हियर. फॉर एग्जांपल अगर कुछ इफ दे आर पासिंग सम लॉ, ठीक है, इन दिस केस इफ द नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी is more than the official majority, है ना. So what will happen is कि if that law is not in the favor, if Indians are not favoring that law, they would pass that, है ना. बट यहाँ पे उन्होंने ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन करके रखी है, मतलब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बस नंबर्स के लिए होंगे, लेकिन जब रियल डिसीजन मेकिंग की बारी आएगी तो वो ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी से ही होगा. सो हियर दे आर प्लेइंग अ गेम जिसमें दे आर जस्ट ट्राइंग टू शो कि हमने इंडियंस को इंक्लूड किया है, बट किसी लॉ को पास करवाने के एक्चुअल पावर्स नॉन ऑफिशियल मेंबर्स दैट इज इंडियंस के पास नहीं थे. ओके, सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज्ड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल gave power to discuss budget, address question to the executive. ठीक है, legislative councils के power बढ़ा दिए गए. they could now discuss the budget, मतलब money matters वो लोग discuss कर सकते थे और executive को questions भी पूछ सकते थे. पहले ये powers नहीं थे, now they were given this power. Okay, third point is provided for nomination of non-official members to Central Legislative Council by Viceroy. Okay, now see this ये point थोड़ा बड़ा है, but I'll explain you in a very simple language. Please don't get confused. So third point में क्या हो रहा है कि they are provided for nomination of non-official member. अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को सिलेक्ट करना है. ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए रैंडमली तो किसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, है ना. कोई उनको नॉमिनेट करेगा तभी वो लोग उनको सिलेक्ट कर सकते. तो अब इस पॉइंट में दे हैव एक्सप्लेन्ड कि हाउ द नॉमिनेशंस वेर मेड, है ना, नॉमिनेशंस कैसे कर रहे थे. तो द फर्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय वॉइसरॉय. तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो वॉइसरॉय का काउंसिल था उसके लिए नॉमिनेशंस की रिकमेंडेशन कहाँ से आ रही थी,
प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स। मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जिन लोगों को नॉमिनेट करेंगे, जिन लोगों को रिकमेंड करेंगे, दिस पीपल will go to central legislative council by viceroy। एंड जो जो लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार और चेंबर्स, इन सब से जो भी रिकमेंडेशंस आएंगे, दे विल गो टू council, provincial legislative council by governor। Okay, so there are two legislative council: central legislative council which comes under viceroy, and provincial legislative council which comes under governor। Okay, so for central legislative council, nominations will be taken from Provincial Legislative Council and Bengal Chamber of Commerce, and for Provincial Legislative Council, recommendations will be taken from district boards, municipalities, university, and trade association. Okay, this act, now moving on, this act made limited and indirect provision for the use of election in filling up non-official seat। Okay, so the very highlighted and important point is, ये जो सब हम लोग नॉमिनेशन की बात कर रहे थे, दिस वाज इनडायरेक्टली इलेक्शन प्रोसेस चल रहा था, है ना। सो इनडायरेक्टली इलेक्शन प्रोसेस ऑफ a process similar to election was carried out। Okay, so next point is, provided separate representation of presidency, corporation, chambers of commerce, university, and zamindars। Okay, so what they are saying is कि they provided separate, sixth point is here, provided separate representative of, just a second guys। So okay, this is ending here। Okay, now this sixth point is of, features of Act of 1990। So we'll see in this। Okay, now this has ended here कि election के एक similar process was carried out। Now features of Act of 1990। Okay, now this act was also known as Morley Minto Reform। Okay, the second name of this act was Morley Minto Reform, and Morley was the SOS, means Secretary of State that time, and Minto was the viceroy, that is why it is called as Morley Minto Reform। Okay, so the first point here is, size of central and provincial legislative council was increased। upper arrow means increased। Okay, provincial और legislative council का साइज इंक्रीज कर दिया था। ओके, सेंट्रल काउंसिल का फ्रॉम 16 मेंबर्स टू 60 मेंबर्स हो गए थे, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक कोई नंबर नहीं था, इट वाज नॉट यूनिफॉर्म। ओके, सो काउंसिल का साइज बढ़ाया। फर्स्ट पॉइंट, रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल काउंसिल अलाउड provincial council to have non-official majority। So as I explained you earlier कि non-official भले ही कितने भी बढ़ा दे, लेकिन official majority they were not increasing। Okay, so third point is, enlarged functions of both council members were allowed to ask questions, move resolution on the budget, etc। Okay,
तो दोनों भी काउंसिल्स के जो फंक्शंस है उनको एनलार्ज कर दिया था, उनको ब्रॉडन कर दिया था. नाउ दे कुड आस्क क्वेश्चन, दे कुड मूव रेजोल्यूशन ऑन budget. Okay, so the fourth point is provided for the first time association of Indians with Executive Council of Viceroy and Governor. Satyendra Prasad Sinha was the first member to join Viceroy's Executive Council and he was appointed as a law member. ठीक है, अब now what fourth point is saying कि first time एक association of India प्रोवाइड की गई थी विथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर. ओके, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट मेंबर, एक पहले मेंबर थे हु जॉइन द फर्स्ट इंडियन मेंबर थे जो हु जॉइंड वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड ही वाज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर. ओके, the next point is introduced system of communal representation for Muslim by accepting of communal electorates. Okay, so पहले ऐसा था कि communal electorate नहीं था. For example, I'll explain. Communal electorate means कि अंडर कम्युनल इलेक्टोरेट क्या होता है, जो मुस्लिम मेंबर्स है वो उनको मुस्लिम वोटर्स ही वोट करेंगे, है ना. दैट इज कॉल्ड कम्युनल इलेक्टोरेट. सो फर्स्ट टाइम कम्युनल इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस हुआ इस केस में. ओके, सो पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको उसी कम्युनिटी के लोग वोट कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड communal electorate or separate electorate. Okay, so this was introduced for the first time. Okay, so these were the important points. Now Government of India Act of 1919. Okay, so Government of India Act relaxed the central control over provinces by demarcating provincial subjects. Okay, now what is happening in Government of India Act is कि it relaxed the central control over provinces. मतलब सेंट्रल का जो कंट्रोल था प्रोविंसेस पे उसको रिलैक्स किया. कैसे रिलैक्स किया? बाय डीमार्केटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट. प्रोविंशियल सब्जेक्ट और सेंट्रल सब्जेक्ट को डीमार्केट किया, है ना. जैसे पहले डिमार्केट किया था कमर्शियल और पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स को, वैसे यहाँ पर सेंट्रल सब्जेक्ट्स और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डीमार्केट किया गया. ओके, नाउ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वेर फॉर मेकिंग लॉज, है ना. एंड okay, I'll explain you. So the central and provincial legislature were authorized to make laws on their respective list. Okay, तो ये अपने अपने respective list पे they could make laws. Okay, however the structure of government continued to be centralized. Structure of government का structure centralized ही था, but provincial subject and central subject they could make laws. Okay, now provincial subject further were divided into transferred subject and reserved subject. ठीक है, provincial subject को फिर से transferred subject और reserved subject में divide कर दिया गया. Now transferred subject were administered by G means governor plus ministers. Okay guys, maybe आपको ऐसा लग रहा होगा कि कितना दिस इज कंफ्यूजिंग, बट दिस अगर आप एक एक लाइन पढ़ेंगे तो इट इज़ नॉट एट ऑल कंफ्यूजिंग. एंड आई हैव रिटर्न इसको बहुत कॉम्पैक्ट करने की कोशिश किया है बिकॉज वी डोंट वांट कि पेजेस बढ़े हमारे. वी वांट टू रिड्यूस द मैटर.
so that we would be able to revise quickly. Okay, so प्रोविंशियल सब्जेक्ट को ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वेर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर एंड मिनिस्टर, एंड रिजर्व सब्जेक्ट वेर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल. ठीक है, and this was known as hierarchy. Okay, dual government is different thing, hierarchy is different thing. So here we have seen कि hierarchy कैसे establish हुई. Okay, introduced for the first time bicameralism and direct election. Indian Legislative Council was divided into upper house and lower house. Bicameralism का meaning क्या होता है कि जो हमारा legislative council है, जो law making body है, वो दो हाउसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, डिवाइड हो गई है, जिनको हम लोग बोलेंगे अपर हाउस एंड लोअर हाउस, जब भी जिसको हम अभी बोलते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा. एंड मेंबर्स वेर चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन. और ये अपर हाउस और लोअर हाउस के मेंबर्स कैसे चूज किए गए थे? डायरेक्ट इलेक्शन से. ओके, इट रिक्वायर्ड दैट 3 out of 6 member of Viceroy's Council should be Indian. As I told you, Indians को include करने की कोशिश हो रही थी, तो 3 out of 6 members were were to be Indians. Okay. Now extended communal representation. Now in earlier act we had seen कि communal representation introduced हुआ था for Muslim only. Now in Government of India Act 1990, what is happening is communal representation is extending to other communities also, like Sikhs, Indian Christians, Anglo Indians and Europeans. Okay, पहले बस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए था, बाद में ये दूसरे कम्युनिटी के लिए भी एक्सटेंड हो गया. ओके, ग्रांटेड फ्रेंचाइजी बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन. ठीक है, फ्रेंचाइजी दी गई. फ्रेंचाइजी मीन्स फ्रेंचाइजी मीन्स राइट टू वोट. ओके, राइट टू वोट है ना. जैसे अभी एवरीवन हैज़ राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ देयर एजुकेशन, कितनी प्रॉपर्टी है, अमीर है, गरीब है, लड़का है, लड़की है, पैसा है, नहीं है, एजुकेटेड है, नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एनीवन कैन वोट. बट उस टाइम पे फ्रेंचाइजी मतलब वोटिंग पावर was given on the basis of property tax and education. मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है उसी को वोटिंग करने का अधिकार है, जो ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है उसी को वोटिंग का अधिकार है, जो एजुकेटेड है उसी को वोटिंग का अधिकार है. ओके, जस्ट अ सेकेंड. Okay, sorry. So this was the thing we were talking about franchising, मतलब right to vote. Okay, then created new office of high commissioner for India in London. जैसे secretary of state का new office create हुआ था पहले act में, in the same way new office of high commissioner was created for India in London. Established public service commission, separated provincial and central budget, and appointed statutory commission to report its working after 10 years. Okay, पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश हुई थी, जैसे अभी हमारा यूपीएससी है वैसे ही पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश हुई थी. और प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट्स को सेपरेट किया गया था. पहले प्रोविंसेस के मतलब स्टेट और सेंटर, फॉर एग्जांपल सेंटर का बजट अलग और स्टेट गवर्नमेंट का अलग, वैसे ही प्रोविंशियल और सेंट्रल के बजट को अलग किया गया था. अपॉइंटेड स्टैट्यूटरी कमीशन टू रिपोर्ट इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years. एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट की गई and its working was reported after to report its working after 10 years. Okay, now Simon Commission. It was
established in November 1927. So, British government appointed a seven-member commission whose chairman was John Simon. Okay, and why this commission was established? To report the condition of India under new constitution. Okay, so जो new constitution बना था under British crown, उसके अंडर इंडिया कैसे फंक्शन कर रहा है इसको रिपोर्ट करने के लिए एक कमीशन बनाया जिसका नाम था साइमन कमीशन. ओके, सो since all the members of this commission were British, it was boycotted. So ये कमीशन में इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं था. ऑब्वियसली अगर ब्रिटिश सारे मेंबर्स है तो दे आर गोइंग टू प्रेज द ब्रिटिश क्राउन एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड वॉट एवर दे आर डूइंग, and Indians were not included, है ना. So because Indians were not included, all the Indian leaders they boycotted Simon Commission. And but later on, what recommendations Simon Commission gave was abolition of hierarchy. What they said is abolish the hierarchy. मतलब here we have seen ना ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट इसको मिला के डायरार्की बनी थी. उन्होंने कहा कि वो डायरार्की को अबॉलिश करना चाहिए और बोला है कि responsible government should be established in provinces. Okay, central government should not carry out all the tasks. The provincial government also should be taken care of, and responsible government should be established in the provinces. Third point is establishing Federation of British India and Princely State. Okay, क्या करना है, उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इस्टेब्लिश करना है एंड फेडरेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट टू. ओके, कंटिन्यू कम्युनल इलेक्टोरेट. क्या बोला उन्होंने? कम्युनल इलेक्टोरेट जो बना है मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियंस एंड यूरोपियंस का, दैट शुड कंटिन्यू. टू कंसिडर देयर प्रपोजल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वेयर कन्वेड. ओके, अब ये जो प्रपोजल था साइमन कमीशन का, ये पुट फॉरवर्ड करने के लिए, इंडियंस के सामने रखने के लिए थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था. ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कशंस On the basis of this discussion, white paper on constitutional reform were prepared. Okay, ये जो भी डिस्कशन हुआ था इसके ऊपर एक वाइट पेपर प्रिपेयर किया था एंड दैट वाज कॉल्ड वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड सबमिटेड टू द जॉइंट कमिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. ओके, और ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबमिट किया था. ओके, नाउ कम्युनल अवार्ड took place in August 1932. So Ramsay MacDonald, British Prime Minister, announced the scheme for representation of minorities that came to be known as Communal Award. So जैसे हमारा earlier what we had seen was जो हमारा communal representation था, है ना, कम्युनल इलेक्टोरेट था, वैसे ही ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक और सिमिलर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू द माइनॉरिटीज, दैट इज डिप्रेस्ड क्लासेस और शेड्यूल्ड क्लासेस अलोंग विथ मुस्लिम, सिख्स एंड क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस. इन सब के साथ में डिप्रेस्ड क्लास को भी एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए. इसके लिए रामसे मैकडोनल्ड ने एक he had put forward a idea. Okay, that was called communal award. So we'll see in history इसकी entire story, but for now ये communal Gandhiji did not accept this communal award. Then Dr. Babasaheb Ambedkar had to convince him. Then a Poona Pact took place, and the entire story I'll explain you someday else. So what happened in the end? Poona Pact took place, and it retained the Hindu joint electorate and gave reserve seat to depressed classes. Okay, पहले Gandhiji and some other leaders were against it, but after Poona Pact they gave the permission. Okay,
Now, Government of India Act, GOIS, Government of India Act of 1935. Okay. First point is it established All India Federation. Okay. एक All India Federation को establish किया, and that was divided into princely state and provinces. Provinces were also called as unit. Okay, and what it did was it divided powers between center and units. Okay, so there were three it was divided into three categories: federal list, provincial list, and concurrent list. Okay, federal list gave powers to centers in 59 subject, provincial list gave power to province in 54 subject, and concurrent list gave power to both in 36 subjects. Okay, so we'll try to understand. So what happened is it provided establishment of All India Federation consisting of provinces and princely states. The act divided powers between centers and units in terms of three lists. Okay, we have seen all those. Okay, so next, what is Government of India Act 1935 doing? It is abolishing hierarchy as suggested by Simon Commission. It introduced provincial autonomy. मतलब provinces have the power to do anything they want. They are autonomous now. Introduced responsible government in provinces. Okay, these were the suggestions. Governor was required to act with advice of minister. Okay, governor could not take decision without taking advice of ministers. Okay, next point is intri- sorry provided for adoption of hierarchy at center. Federal subjects were divided into reserved list and transferred list, but this was not implemented. Okay, they gave an idea that you can adopt hierarchy at the center, and how can you do that? That you can do that by dividing federal subject into reserved and transferred subject, and but this idea was not implemented. Now, next point is introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces. So, out of 11 provinces, in 6 provinces, bicameralism was introduced. So, what do you mean by bicameralism? That is, upper house and lower house was divided. Okay. Further extended communal representation by providing separate electorate to scheduled caste, women, and labor. Okay, in earlier we have seen that idea they had put forward that idea in Government of India Act 1935. They finally made it a law. Okay, abolished Council of India. Okay, Council of India was abolished. Okay, next point, extended franchisee. Okay, so earlier we had seen ki franchisee, that is right to vote, was given to only those who were paying tax or those who were rich or those who were educated. What is happening now is 10%. They are extending, they are giving more people the right to vote. So 10% of total population is getting the right to vote. Next point is RBI was established and to control currency and credit of the country. Then federal, this is federal, okay. Federal PSC's Public Service Commission was established. Federal means central. Provincial PSC, that is Provincial Public Service Commission, was established. Provincial matlab State Public Service Commission, and Joint Public Service Commission was established. And the last point is Federal Court was established in 1937. Okay, 10 points, very easy. I have just written the keywords which you should remember in this act. Okay, so rather than reading the entire passage which is given in the book, you can just remember the key points. Okay, now
the last. We are done with this, no? The last. Indian Independence Act 1947. So at last we are getting independence, and then Indian Independence Act of 1947 comes into play. पार्टीशन के बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडिया पाकिस्तान अलग हो जाते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान होता है. You'll get to know if you don't know any basics, I'll teach you that in history, but here for now we'll see Indian Independence Act 1947. So what are the features? Okay, first, it ended the British rule from 15th August 1947. So after 15th August 1947, the British no more ruled us. Okay, this was should be ruling us. This was given in Indian Independence Act 1947. And then, second is partition of India and Pakistan, right to secede from British Commonwealth. Okay, now Commonwealth term, why is Commonwealth term coming over here, is because uh, all those countries or all those colonies which British were ruling were called as Commonwealth countries, है ना. For example, I'll give जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंबई इज़ अ कंट्री, है ना. मुंबई एक कंट्री है, और मुंबई अ, मुंबई का जो किंग है और क्वीन है, दैट इज़ रूलिंग पुणे, नागपुर, दिल्ली, है ना. ये सब कंट्रीज़ को, पुणे एक कंट्री है, नागपुर एक कंट्री है, दिल्ली एक कंट्री है, इसको मुंबई रूल कर रहा है. ठीक है. सो जो मुंबई है वो जिन जिन कंट्रीज़ को रूल कर रहा है, वो उन कंट्रीज़ को क्या बोलेगा, कॉमनवेल्थ कंट्री, है ना. देयरफॉर पुणे विल बी कॉल्ड अ कॉमनवेल्थ कंट्री बिकॉज मुंबई इज रूलिंग पुणे, मुंबई इज रूलिंग दिल्ली, देयरफॉर दिल्ली विल बी कॉल्ड कॉमनवेल्थ कंट्री. सो सिमिलरली इन दिस केस इंडिया वॉज कॉल्ड अ कॉमनवेल्थ कंट्री, और एक ऐसे ग्रुप, देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ कंट्री in which India was a part because it was ruled by British. Now India was given right that if you want you can if you want you can stop being a Commonwealth country. Now British का आपके ऊपर कोई हक नहीं है, तो you can stop being a Commonwealth country. Okay, it abolished the office of Viceroy, provided GG मतलब Governor General appointed by British King on the advice of the cabinet. Okay, वॉइसरॉय का ऑफिस इस्टेब्लिश अबॉलिश किया गया, और उसके बाद में एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया फॉर टाइम बीइंग. ओके, एम्पावर्ड सी मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू एस्टैब्लिश एनी कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक पावर दिया गया कि आप जब तक इंडिया का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है, आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स अडॉप्ट कर सकते हो, और ब्रिटिश ने जो भी अभी तक लॉज बनाए हैं, आप किसी भी लॉ को रिपील कर सकते हो. ठीक है, डिनाई कर सकते हो, बिकॉज ब्रिटिश वेयर नो मोर रूलिंग. empowered CA, that is Constituent Assembly, to legislate for their respective territories. Till new constitution was adopted. ठीक है, Constituent Assembly को एक पावर दिया गया टू मेक लॉज फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज, जब तक एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है. ठीक है. अबॉलिश्ड ऑफिस ऑफ SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. ओके, उसका ऑफिस खत्म हो गया था. प्रोक्लेम्ड लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, मतलब ब्रिटिश अभी दे वर नो मोर रूलिंग, दे वर नॉट रूलिंग इंडिया, तो उनकी जो पैरामाउंटेसी है, वो पैरामाउंटेसी मतलब जो एक वो क्वीन का इन्फ्लुएंस था, दैट गॉट लैप्स्ड. ओके, ग्रांटेड फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट टू ज्वाइन आइदर ऑफ कंट्रीज. ओके, प्रिंसली स्टेट को ऑप्शन दिया था कि यू कैन ज्वाइन इंडिया और यू कैन ज्वाइन पाकिस्तान. ओके, provided governance of each dominion and provinces by Government of India Act 1935. Okay, Government of India Act 1935 के अंडर हर एक प्रोविंस का गवर्नेंस
दिया गया था. ओके. डिप्राइव्ड ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट्स टू वेटो बिल. ब्रिटिश मोनार्क मतलब ब्रिटिश किंग के पास जो राइट्स थे टू वेटो एनी बिल, वो अब नहीं रहे. ओके. Designed designated Governor General of India as provincial governor as constitutional head, and he would act on the advice of COM is Council of Minister. तो okay, so time being एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जब तक जब तक इंडियन का कोई टेक ओवर नहीं करता, एंड ही वुड एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ओके. ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स. ओके. एज आई टोल्ड यू कि बॉम्बे अगर पुणे को रूल कर रहा है, तो किंग ऑफ बॉम्बे विल बी कॉल्ड एज king of Bombay will also be called as king of Pune because he is indirectly ruling Pune. तो एम्परर ऑफ इंडिया का जो रॉयल टाइटल था वो अब ड्रॉप हो गया. डिसकंटिन्यूड अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज. ओके. जो ब्रिटिश मेंबर्स थे उनका सिविल सर्विसेज में अपॉइंट डिसकंटिन्यू किया. एंड द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज लॉर्ड Mountbatten was made first Governor General of India after independence, and Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister. And CA is Constitutional Assembly formed in 1946 became the Parliament of India. So guys, like this we have completed a very large chapter and first chapter of polity. I hope you have seen the first video and you have liked this video too. Now we'll move on to chapter 2. I have already made the video on chapter 2, but I wanted to make it once again for new people who are joining, and a updated one, a shorter one. So please like, comment, and share this video and subscribe to my channel. I will see you in chapter 2. That will be a better version. I hope you like this video, and bye bye, take care.